I am Fazal Sarang. By profession, I am an architect. My question is to Mr. Dr. Zakir Naik. Is the non-veg or non-vegetarian food is the only reason for the heart disease? The brother asked a very good question. That is non-veg the only reason for the heart disease? And this was spoken by Mr. Zaveri, that flesh, animal flesh, chicken, mutton, beef causes heart disease. It can cause, he's right. And he further said, there is not a single vegetable source which contains cholesterol. If you tell that to any doctor, not the ideological vegetarian, they'll agree. Heart disease is caused when the diet contains more fat and more cholesterol, irrespective whether it is veg or non-veg. Irrespective. Non-veg foods do contain high cholesterol, but even vegetable foods, groundnut oil, cashew nut, coconut, ghee, butter, all this, even a common housewife knows. You know why? There are ads in the media. Have Saffola oil, will not cause heart disease. Indicating the other oils cause heart disease. Simple. You don't have to be a doctor. It's a blatant 100% falsehood. I, being a medical doctor, I challenge Mr. Rashmi Vadavi to answer, does butter contain fat or not? And the doctors do tell the people suffering from heart disease, don't have fat, don't have butter, don't have groundnut oil, don't have cashew nut oil. So where did he get this idea from? From these books. This book he gave to me. Correct? This book you gave to my brother. Who gave? Mr. Saleja. Mr. Saleja gave this book. In this book also it is mentioned the same thing, that there is no cholesterol in vegetables. I'm sorry if I thought, because the first time I'm meeting Mr. Zaveri here, if he didn't give these books, I apologize. But one thing, that all these books are published by Jain organizations and distributed in Bombay, cheap. Yes, I'm not blaming. I don't want to hurt anyone's feeling. Let us not have a dialogue across this thing. I'm not going to hurt anyone's feeling. I'm sorry, I didn't want to say that, but I was compelled. I don't want. If it's not, you said not written by Jain, it's not written. No, you said, Dr. Zakir, that I should reply. You will have a chance in your question answer time. Sir, allow you time. In your time you can respond back. No, I'll allow you to respond back anything you want in your time. And I request the chairman to give me half minute more. I was disturbed. Half minute more. No, he's too smart. We'll not give him half minute more. See, because so many allegations, egg. He told egg is the cause. Egg does contain cholesterol. It's rich in cholesterol. But it's not the major cause. Today's research and medical books also say that the cholesterol in the egg is not the major villain. It is the saturated fat in which you fry the egg. Butter, ghee, lard, which is the main villain. If you don't have this frying in ghee, butter, there are less chances of having ischemic heart disease by egg. And today, amongst the population, 2/3 of the population are non-responders to cholesterol. The moment there's high intake of cholesterol, like taking egg, the liver immediately cuts its own production. And the level that reaches the blood is the same. There are 1/3 people who are responders to cholesterol. They have a problem. They should abstain from yolk of the egg. Otherwise, even if you have 1 or 2 eggs a day, you will not have heart diseases. And if you have it with bacon, with pork, then the problem. If you fry in ghee, you'll have a problem. If you fry in groundnut oil, you'll have a problem. Causing baldness. I don't want to give examples. Even if you check here, there are many people who are bald. There are great philosophers who are bald. I don't want to take their names. I don't want to hurt your feelings. So this thing is just a research which is based on illogical assumption. A research should be practical. And the associate factor for heart disease is also alcohol as well as smoking. These two are also one of the associate causes for heart diseases. Yes, in America, heart diseases are more non-veg because they are fats. Quran says don't have an excess, this problem will be solved. Secondly, the vegetarians of America, they are fluent. It's a vogue to be a vegetarian because to buy veg food is expensive. If you turn Mercedes car, you have status. If you have veg food, it is status there. About 3 to 7% are vegetarian in America. Less than 1% are pure vegetarian.
less than 1%. Because they are affluent and they are rich, they take more care of hygiene. And many vegetarian ideologically, also, like even Mr. Rashmi Zaveri may agree, that alcohol is prohibited, smoking is prohibited. Because of associated factors, the case of heart disease in vegetarian is less. But anyone who has food which is rich in cholesterol or fat, irrespective whether it is veg or non-veg, he will have heart disease. To prevent it, follow the guidance in the Quran, in Surah Taha, chapter number 20, verse number 81, that do not commit excesses. That reminds me of a story. In school we had learned that there was a religious priest who ate excessive food, and he had 64 laddus, and when he came back his wife said that why don't you have furan chutki, some digestive. So he says, अरे बावली अकल नाई बन के 6 बच्चों की माता, अगर चूरन चुटकी के लिए जगह होती तो मैं 2 लड्डू और ना भोग लेता. जी दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने आज की वीडियो देखी है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि डॉक्टर जाकिर नाइक का ये बेहतरीन जवाब आप लोगों ने सुना हो, आप लोगों को जी दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने आज की वीडियो देखी है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि हाँ, डॉक्टर जाकिर नाइक की इस वीडियो से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। जैसे कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत बेहतरीन किस्म का जवाब दिया है कि सिर्फ गोश्त खाने से कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा नहीं होता, बल्कि सब्ज़ी खाने से भी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। इस तरह डॉक्टर जाकिर नाइक ने साइंस के हवाले से देकर बहुत सी मिसालें दी है कि इस तरह कोई भी ऐसी सब्ज़ी नहीं है जिसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। सब्ज़ियों में भी कोलेस्ट्रॉल होता है, सब्ज़ियों से भी इंसान को तो ऐसी बीमारी लग सकती है। इस तरह जो है सिर्फ ये गोश्त नहीं है जिसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है और दिल की बीमारियाँ लग सकती है। इस तरह डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत ज़्यादा एग्जांपल दिए, जैसे कि अंडे की एग्जांपल दी है कि ये लोग कहते हैं कि अंडे में बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है, इससे जो है हम इंसान के अंदर बीमारियाँ पैदा होती है। तो इस तरह डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत बेहतरीन जवाब दिया है कि अगर आप अंडे को जो है तेल में पकाओगे या मकई के तेल में पकाओगे तो इस तरह आपको वो बीमारी लग सकती है, आपको गंजापन हो सकता है। तो इस तरह जो है आपके सर पे बाल जो है वो नहीं रहते। इस तरह डॉक्टर साहब ने एग्जांपल दी है, अगर आप अंडे को जो है वो घी में या मकई के घी में अगर आप ना पकाओ, ऐसे खाओ, तो आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। इस तरह जो है डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत बेहतरीन एग्जांपल भी दी है सूरत ताहा की। अगर कोई भी चीज़ दोस्तों अगर आप हद से ज़्यादा खाओगे तो वो आप लोग के लिए नुकसानदेह होगा। जिस तरह के डॉक्टर जाकिर नाइक ने अमेरिका की मिसाल दी है कि वहाँ के जो बहुत से लोग हैं वो मोटे हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुराक खाते हैं, लेकिन बहुत से सेहतमंद भी है। तो दोस्तों जैसे कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक एग्ज़ाम्पल दी है कि सूरत ताहा में है, कुरान मजीद का हवाला देकर कहा है कि इतना कहो जितना आप खा सकते हो, लेकिन लिमिट में कहो, बैलेंस में कहो। इस तरह डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक एग्ज़ाम्पल भी दी है कि एक मजहबी पादरी था जो कि अपने ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाता था। तो उसने ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाया हुआ था, वो अपने घर आ रहा था, तो उसकी बीवी उसे कहती है कि आपके पास हाजमा की दवाई नहीं है कि आप हाजमे की दवाई खा लें। तो उसके साथ जेब में 64 लड्डू भी थे। तो वो बीवी से कहने लगा कि ए मेरे 6 बच्चों की बेवकूफ़ माँ, अगर मेरे पास हाजमे की दवाई होती, उसकी जगह होती, तो मैं 1-2 लड्डू और ना खा लेता। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि डॉक्टर जाकिर नाइक की ये वीडियो भी आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी कीमती राय हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। वस्सलाम।